former Prime Minister and PTI Chairman Imran Khan is relentlessly continuing his campaign, in one way or the other, to push Prime Minister Shehbaz Sharif and Sindh and Balochistan Chief Ministers Murad Ali Shah and Abdul Quddus Bazenjo to prematurely dissolve the National Assembly and the two provincial assemblies in order to have early general elections in the country. He organized a series of public rallies and marches to pressurize the federal government to accept his demand to hold immediate general elections in the country. Inherent in these moves was the threat that the government might face disruptions in the business of the state if the demand was not accepted. Despite a spirited campaign stretching over some 8 months, the federal government proved to be a tough nut to crack and refused to capitulate. The latest move of the former Prime Minister is to threaten dissolution of the two provincial assemblies, including the one in Punjab, which is governed by Chief Minister Chaudhry Parvez Elahi of the PMLQ, the much smaller allied party holding the balance of power in the assembly between the two larger and almost equally strong parties, the PTI and PMLN. The other provincial assembly in KP is solely controlled by the PTI and headed by Chief Minister Mahmood Khan. Imran Khan's announcement of his party's intention to dissolve the two assemblies was probably based on his assessment that his opponents controlling the federal government and the two other provincial assemblies could not afford to hold elections in 2 installments separated by about 10 months. The exercise would not only be far more expensive than a simultaneous one for the national and the 4 provincial assemblies, but could also create unforeseen constitutional and administrative issues. These could include the absence of neutral caretaker governments in Punjab and KP and the possibility of heavy political influence wielded by the governments in these provinces during the subsequent National Assembly polls, if elections to the two provincial assemblies are held prematurely. Many feel it is almost insensitive to discuss early elections in the current circumstances. The federal government spokespersons had earlier been egging on Imran Khan to dissolve the two provincial assemblies if he wanted early general elections in the whole country. However, after Imran Khan's announcement to dissolve them, the PDM-PPP Combine announced they would resist the dissolution by such maneuvers as moving a no-confidence resolution against the chief ministers, which would block dissolution during its pendency and or ask the chief ministers through the governors to seek votes of confidence from their respective assemblies. A move that carries some risk of defeat for the Punjab Chief Minister. Even trying the risky route of governor's rule under Article 234 of the Constitution was mentioned. The federal coalition government announced that even if the two provincial assemblies were dissolved, they would allow fresh elections of only these two assemblies to take place and would not dissolve the National Assembly and the remaining two provincial legislatures prematurely. This possibility made many in the PTI and PMLQ question the wisdom of the early dissolution of the two assemblies controlled by the PTI and ask the PTI chief to reconsider his decision. Although Imran Khan, or any other political leader for that matter, is free to demand early elections, the prerogative of dissolving a national or provincial assembly prematurely and thus going for early polls rests solely with the leader of the House in the respective assembly. Pressuring a leader of the House to use the power which constitutionally belongs only to him is, then, equivalent to disrespecting the Constitution. Our Constitution provides that unless an assembly is prematurely dissolved by the concerned leader of the House, it completes its 5-year term and then the ECP holds fresh elections within 60 days of the completion of the term of the assembly. Pakistan is facing an acute economic crisis at the moment, and many experts have alluded to the possibility of a financial default, which might have extremely serious ramifications for the country. A large part of the population, especially in Sindh, Balochistan and South Punjab, have still not resettled after unprecedented rains and floods devastated their homes, farms and businesses. Many feel that it is almost insensitive to discuss premature elections in such circumstances. Some of the federal government ministers have recently indicated the possibility of invoking the emergency provisions of Article 232(6) of the Constitution, under which the 5-year term of the National Assembly can be extended by up to 1 year after the proclamation of emergency. Facing a judicial challenge to such a proclamation and paying the political price may, however, not be easy. But if economic conditions deteriorate further, emergency provisions may become a serious option.
Imran Khan argues that the current economic crisis can be successfully faced and resolved by a government which has a strong and fresh public mandate, hence, the need for early elections. This argument may have been more convincing had Imran Khan not expressed serious reservations about the present election commission, which is constitutionally responsible for holding elections. In addition, the PTI is absent from the National Assembly and would not have any input in the formation of a federal caretaker government, which would run the affairs of the state during elections. So, it is highly unlikely that the PTI would accept the result of the poll held in these conditions unless the result is squarely in favor of the PTI. Resultantly, it is not guaranteed that political stability will return to Pakistan even after fresh elections. The decision of the Council of Common Interests taken in April 2021 under Imran Khan's chairmanship to hold a fresh census before the next election can't be implemented in case of earlier polls. It is, therefore, appropriate for all assemblies to complete their 5-year term, and for the PTI to return to the National Assembly and hold the government accountable in Parliament and participate in the formation of a caretaker government before going for general elections across the country in October 2023. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान किसी न किसी तरह से अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं ताकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला मुराद अली शाह और अब्दुल कुद्दूस बजंजू को कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों को कब्ल अज़ वक्त तहलील करने पर मजबूर किया जा सके ताकि मुल्क में कब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात कराए जा सकें। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अवामी रैलियों और मार्चों का एक सिलसिला मुनज़्ज़म किया कि वो मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात के उनके मुतालबे को कबूल करे। इन इक़दामात में यह ख़तरा शामिल था कि अगर मुतालबा कबूल नहीं किया गया तो हुकूमत को रियासत के कारोबार में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन 8 माह तक जारी रहने वाली पुरजोश मुहिम के बावजूद वफाकी हुकूमत को तोड़ना एक मुश्किल नट साबित हुआ और उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म का ताज़ा तरीन अक़दाम पंजाब समेत 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की धमकी देना है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत है, जो 2 बड़ी और तकरीबन यकसा तौर पर मजबूत जमातों के माबैन असम्बली में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाली बहुत छोटी इत्तेहादी जमात है। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के पी में दूसरी सूबाई असम्बली मुकम्मल तौर पर पीटीआई के कंट्रोल में है और उसकी सरबराही वज़ीर आला महमूद खान कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से उनकी जमात की जानिब से दोनों असम्बलियों को तहलील करने के इरादे का ऐलान शायद उनके इस अंदाजे की बुनियाद पर किया गया था कि वफाकी हुकूमत और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों को कंट्रोल करने वाले उनके मुखालिफिन तकरीबन 10 माह के वक्फे से 2 एक साथ में इंतखाबात कराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मश्क न सिर्फ कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए बैक वक्त होने से कहीं ज़्यादा महंगी होगी बल्कि गैर मुतवक्के आइनी और इंतज़ामी मसाइल भी पैदा कर सकती है। इनमें पंजाब और केपी में गैर जानिबदार निगरां हुकूमतों की अदम मौजूदगी और उसके बाद होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात के दौरान उन सूबों में हुकूमतों की तरफ से भारी सियासी असर और रसूख का इम्कान शामिल हो सकता है अगर दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त होते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हालात में कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर तबादला ख्याल करना तकरीबन गैर हसास है। इससे कब्ल वफाकी हुकूमत के तर्जुमान इमरान खान पर जोर देते रहे हैं कि अगर वो पूरे मुल्क में कब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात चाहते हैं तो वो दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दें। ताहम इमरान खान की जानिब से उन्हें तहलील करने के ऐलान के बाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि वो वज़राए आला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करने जैसे हथकंडों के जरिए तहलील की मुखालफत करेंगे, जो ज़ेर इल्तिवा रहने के दौरान तहलील को रोक देगी और गवर्नर्स के जरिए वज़राए आला से उनकी मुतालिका असम्बलियों से एतमाद के वोट हासिल करने के लिए कहेगी। यहाँ तक कि आइन के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज के खतरनाक रास्ते की कोशिश करने का भी जिक्र किया गया था।
वफाकी मखलूत हुकूमत ने ऐलान किया कि अगर 2 सूबाई असम्बलियां तहलील भी हो जाएं तो वो सिर्फ इन दोनों असम्बलियों के नए इंतखाबात की इजाज़त देंगे और कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों को कब्ल अज़ वक्त तहलील नहीं करेंगे। इस इम्कान ने पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ में बहुत से लोगों को पीटीआई के ज़ेर कंट्रोल 2 असम्बलियों को जल्द तहलील करने की दानिशमंदी पर सवाल उठाया और पीटीआई के सरबराह से अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया। अगरचे इमरान खान या कोई और सियासी रहनुमा कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए आज़ाद है, लेकिन कौमी या सूबाई असम्बली को कब्ल अज़ वक्त तहलील करने और इस तरह कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का इस्तेहकाक सिर्फ मुताल्लिका असम्बली में कायद ऐवान के पास है। किसी लीडर पर दबाव डालना कि वो इस ताकत को इस्तेमाल करे जो आईनी तौर पर सिर्फ इसके पास है, आइन की बेहुरमती के मुतरादिफ है। हमारे आइन में कहा गया है कि जब तक कोई असम्बली मुतालिका कायद ऐवान की जानिब से कब्ल अज़ वक्त तहलील नहीं की जाती, वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करती है और फिर इलेक्शन कमीशन असम्बली की मुद्दत पूरी होने के 60 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाता है। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद माशी बहरान का सामना है और बहुत से माहिरीन ने माली डिफ़ॉल्ट के इम्कान की तरफ इशारा किया है, जिसके मुख पर इंतहाई संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने उनके घरों, खेतों और कारोबारों को तबाह करने के बाद अभी तक आबाद नहीं किया है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसे हालात में कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर तबादला ख्याल करना तकरीबन गैर हसास है। वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा ने हाल ही में आइन के आर्टिकल 232(6) की हंगामी दफ़ात को नाफिज करने के इम्कान का इशारा दिया है, जिसके तहत कौमी असम्बली की 5 साला मुद्दत में एमरजेंसी के ऐलान के बाद 1 साल तक तोसी की जा सकती है। ताहम इस तरह के ऐलान के लिए अदालती चैलेंज का सामना करना और सियासी कीमत अदा करना आसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर माशी हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो हंगामी सूरत हाल एक संगीन ऑप्शन बन सकती है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा माशी बहरान का कामयाबी से मुकाबला किया जा सकता है और इसे एक ऐसी हुकूमत हल कर सकती है जिसके पास मजबूत और ताज़ा अवामी मैंडेट हो। लिहाजा कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ज़रूरत है। अगर इमरान खान मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार न करते, जो आईनी तौर पर इंतखाबात के इनेकाद का ज़िम्मेदार है, तो ये दलील ज़्यादा काबिल यकीन होती। इसके अलावा पीटीआई कौमी असम्बली से गैर हाजिर है और इसे वफाकी निगरां हुकूमत की तश्कील में कोई इनपुट नहीं मिलेगा जो इंतखाबात के दौरान रियासत के मामलात चलाएगी। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पीटीआई इन हालात में होने वाले इंतखाबात के नताइज को इस वक्त तक कबूल करेगी जब तक कि नतीजा पीटीआई के हक में न हो। नतीजतन इस बात की ज़मानत नहीं है कि नए इंतखाबात के बाद भी पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। इमरान खान की सरबराही में अप्रैल 2021 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अगले इंतखाबात से कब्ल नई मरदम शुमारी कराने के फैसले पर पहले के इंतखाबात की सूरत में अमल दरामद नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये मुनासिब है कि तमाम असम्बलियां अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करें और पीटीआई के लिए मुनासिब है कि वो कौमी असम्बली में वापस आए और हुकूमत को पार्लियामेंट में जवाबदेह बनाए और अक्टूबर 2023 में मुल्क भर में आम इंतखाबात से कब्ल निगरां हुकूमत की तश्कील में हिस्सा ले। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.